Oh, I'm excited for this one. अच्छा जी, so अस्सलाम वालेकुम guys, and आज जो है we're going to talk about this. So अच्छा जी, मतलब पाकिस्तान में लेस जो है ना उसके बगैर गुजारा नहीं होता है, ठीक है। और हर दुकानदार की ये बोलते हैं जी भाई ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे लेटेस्ट डिजाइन है मॉडल इसका लेस का। बट व्हाट अबाउट द अर्लीस्ट डिजाइन या व्हाट अबाउट इट्स हिस्ट्री? सो लेस जो है वो, आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू लर्न दिस, कि लेस जो है वो यूरोप में शुरू हुई थी इन 1500s। मतलब आई हैड फॉर सम रीजन ऑलवेज अज्यूम्ड कि थोड़ी सी अर्लियर आर्ट है, फर्स्टली, एंड सेकेंडली कि ये इधर जो इस्लामिक वो है ना लैंड्स है वहाँ पे इसका ओरिजिन था, बट अपेरेंटली नॉट। एंड एक्चुअली व्हेन आई थिंक अबाउट इट इट मेक्स सेंस कि लेस ओरिजिनेटेड इन यूरोप। एंड देयर टू टाइप्स ऑफ लेस। एक जो है उसको नीडल लेस कहते हैं, एंड द सेकंड इज कॉल्ड द बॉबिन लेस। और उन दोनों की विजुअली इट्स वेरी हार्ड टू टेल, but of these two types जो laces बनी हुई है, this one is the needle lace and this is the bobbin lace, लेकिन वैसे देखने में there's no difference per se. What the difference is in the technique. So the technique होती है needle और bobbin lace में, so these are two. This is needle lace, this is what it looks like. needle जो है इसके आप इसके अंदर needle से when it comes to bobbin lace, the bobbin lace is kind of like crochet, except you have a million threads. और आप थ्रेड को आपस में मिलते हो, लगाएं में मनी स्टिचिंग में, मुझे विजुअली देख के बड़ा मज़े का लगता है कि सारे धागे हैं and they know exactly where which thread is going. They just it looks like magic. That this is bobbin lace. और this one minute. नीडल लेस और बॉबिन लेस, अब इन दोनों की जो क्या कहते हैं ओरिजिन्स हैं वो दीज देयर इट्स वेरी क्या कहते हैं वेग, बिकॉज दिस इज सच अ डेलिकेट आर्ट के बहुत ज़्यादा अर्ली फॉर्म्स ऑफ लेस या अर्ली एग्जांपल्स ऑफ लेस haven't survived physically. The only way that we know that lace existed back in these times is because of these portraits. तो ये जो ट्यूडर पोर्ट्रेट्स अगर आप देखें फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, जो भी यूरोपियन आपके वो होंगे, रॉयल्टी होगी, सब ने इतने बड़े बड़े रफ्स और इतने बड़े बड़े जो है ना कॉलर्स वगैरह जिसको लग लेस, वहां से हमें पता चलता है कि अच्छा दिस वाज यू नो अ बिग थिंग बैक देन एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ क्या कहते हैं पावर। ये एलिजाबेथन टाइम में आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, इस तरह से बड़े बड़े जो है ना वो कॉलर्स पहना करते थे, इनको रफ्स कहते थे, लेस रफ्स। एंड द बिगर द रफ, the bigger the higher the status basically. So this was quite a status symbol. I mean, as ridiculous as it looks, this was a big thing back then. So ये जो है वो I want to हाँ, ये for some reason वीडियो जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं हो रही थी, but so this lady is making a Tudor lace design, मतलब ये उसने जो कपड़े पहने हुए वो भी like she's basically dressed as a lady in the Tudor times, and this is how lace was made back then. ये एक बहुत common pattern था या very popular pattern back then during the Tudor times. So what she's doing is कि उसने धागों का एक पहले स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और फिर उसके ऊपर वो वीव कर करके तो एक वो बना रही है, बॉर्डर बना रही है लेस का। सो लेस जो है वो उसके जो सेंटर्स थे वो इटली था और फ्रांस था। इटली में जो क्या कहते हैं सबसे बड़ा वो था जो मेडिसी क्या कहते हैं उसको, वो थी डायनेस्टी थी, उनका भी इसमें काफी जो है वो मतलब था स्टेक्स थे ये से। और क्या कहते हैं सो 18th सेंचुरी तक लेस वाज अ बिग थिंग, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया एट द वेरी एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया 19th सेंचुरी में। तो हैंडमेड जो नीडल थी उसका और लेस की जो वैल्यू थी, लेस का जो वो कनेक्शन था विद स्टेटस, वो खत्म हो गया, क्योंकि बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी खास तौर पे वो हुई इसी के ऊपर थी कि अच्छा जो मतलब कुछ लोग हैं उनको इतना
हाई वो दिया हुआ है, कुछ लोग बिल्कुल ही, बाकी जो है वो बिल्कुल ही वो है पिछले में। सो इस टाइम पे देयर वाज दिस बिग अप्रोर का अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, पीपल शुड ऑल बी समवhat ऑफ द सेम क्लास। एंड वो जो लेस का या किसी भी वैल्यूएबल का व्हिच वाज अटैच्ड विद दैट हाई स्टेटस, या वो उसका जो स्टेटस का, उसको जो है वो या खत्म कर दिया गया, या फिर उसको people try to decouple that art from royalty या from aristocracy। तो क्या हुआ कि लेस की जो क्या कहते हैं लेस मेकिंग, so what happened was कि फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, so people started making these big machines, fancy machine, and लेस मेकिंग की भी जिस तरह से लूम्स जो हैं वो हुए, जो कपड़े वो करते थे स्टिच करते थे, उस तरह से लेस मेकिंग की भी मशीन जो हैं वो लोगों ने बनानी शुरू कर दी। एंड दैट फर्दर लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हैंडमेड लेस, क्योंकि क्या कहते हैं obviously handmade lace it was harder to make, it took a lot of time, so people started to so what happened was कि क्या कहते हैं हैंडमेड लेस तो खत्म हो गई लाइक 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के बिल्कुल उस पे, लेकिन क्या कहते हैं फिर भी कुछ लोग जो है वो दे कहते हैं वर्क अलाइव। एंड सो क्या कहते हैं दिस वाज द टाइम जब बिजली आनी शुरू हुई थी और लोगों के पास उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं हुआ करता था। सो हाउ डिड दे वर्क बिफोर दे गॉट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इवन ट्यूडर टाइम में किस तरह से लोग क्या करते थे। How did lace makers see their tiny stitches before electric lighting? Natural daylight was available on long summer days, but lace makers spent many shorter, darker winter days making lace indoors. Some lace makers used candle blocks, a stand that held a single candle and projected beams of light through glass globes that were filled with water. Slow-burning beeswax candles were relatively expensive, and cheap tallow candles were smoky and could discolor the lace, so these stands allowed multiple lace makers to work around a single candle. The most experienced lace makers were allowed to sit closest to the candle block, while the beginners sat behind them. Similar light sources called focusing lamps were also used, not only by lace makers but by engravers and watchmakers as well. In England, lace makers generally began to use candle blocks around St. Catherine's Day, a patron saint of lace makers that is celebrated on November 25th. As part of the festivities, some lace makers jumped over candlesticks, a practice that contributed to the nursery rhyme, Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candlestick. So I actually found this pretty interesting, किस तरह से लोग जो है वो they made use of these very ingenious glass globes जिनमें पानी भरा हुआ होता था to as a diffuser essentially। और क्या कहते हैं so अब handmade art, कोई भी handmade craft, a lot of them were क्या कहते हैं quite very much in decline during the 20th like the early 20th century, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी और फिर उसके बाद वॉर्स हो गई शुरू। सो क्या कहते हैं हैंडमेड जो चीज़ें थी उनका बहुत कम हो गया था रिवाज। So what happened after क्या कहते हैं World War II 1960s 70s onwards, ये जो ट्रेंड था ऑफ हैंडमेड स्टफ वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता फिर से वापस आना शुरू हुआ, and people started to focus more on knitting, crochet, lace making, इस तरह के जो भी crafts हैं उनको वापस से रिवाइव करना शुरू कर दिया लोगों ने। So this is the story of how lace making जो bobbin lace है वो किस तरह से रिवाइव की गई। Making lace was not just a leisure activity. In fact, it often grew out of times of great need and put food on the tables of starving families. During the winter of 1871, a crisis arose when an extreme cold snap froze the Venetian lagoon, and the fishermen of Burano were unable to go out to sea. An initiative to revive lace making, which had been in decline due to the competition from machines, was started with the support of Countess Adriana Marcello, an educated widow with political interests, and the patronage of Princess Margherita of Savoy. A school of lacemaking was established on the island in 1872, and it was thanks to a single elderly lacemaker, Cencia Scarpagliola, that this skill was taught to the master instructors of the school. Starting at age 12, students were paid about 1 lira for a 6-hour day, and the workforce grew to 500 lacemakers by 1898. In the 1970s, the school closed and was turned into a museum, but in 2015, I traveled to Burano to study needlelace for the first time with a former student of the school, Marisa Situri. It just goes to show that it only takes the initiative of one person passing down their knowledge for a traditional craft to survive for generations. So after 1970 जो है वो ये क्राफ्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया, एंड आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड वापस से आया हुआ है लेस मेकिंग का। So oh, and this is a fun fact, did you know कि before क्या कहते हैं photography, बहुत मतलब before photography or before people actually had access to cameras,
लोग किस तरह से लेस पैटर्न्स को पब्लिश करते थे. It was obviously very tedious to draw the patterns by hand. So what they did was this. Did you know that lace makers used early photographic techniques to share lace patterns? The cyanotype or sunprint process, in which paper or cloth that has been treated with ammonium ferric citrate is layered with objects and exposed in UV light, leaves a white pattern where shadows were cast on a brilliant Prussian blue background. First invented by John Herschel in 1842, the technique was used by his daughter, Julia Herschel, to print historic laces for the book A Handbook for Greek and Roman Lacemaking in 1869. It's an ideal medium for lace teachers to make prints of finished work for their students, and collectors also used it to document their lace in volumes. This past fall, I traveled to an artist retreat on a remote island in the UK, where we created cyanotypes of lace, flowers, and hair. I made sunprints of lace made by my friend Elion and of a doily crocheted by my friend Nasa. Just like 19th century cyanotypes, our prints serve as physical records of the labor behind each stitch. So I want to share this video essentially. Now, आजकल जो सबसे ज़्यादा महंगी या सबसे ज़्यादा जो valuable lace होती है उसको लीवर्स लेस कहते हैं and it's made in France. And it is nowadays made by machine. लेकिन उस मशीन की भी जो कहानी है वो बहुत fascinating है. So I like to say that. Thousands of individual threads, loaded by hand, are woven together to create one of the most intricate fabrics in the world, Lever's lace. But making this lace isn't easy. A new design can take 3 months to produce, and depending on the materials, 1 square meter can cost over $500. Despite the premium price, the lace industry in France is a fraction of its former size, and it's hard to find new lace makers to continue the trade. So how is Lever's lace made? And why is it so expensive? This is a Lever's loom. It's 6 meters long and over 100 years old. These looms were invented to match the quality of handmade lace. Each design is translated from paper into these punch cards, which are fed into the loom to create a pattern. These looms are essential for making Lever's lace, but there are only a few hundred left today, 40 of which are at this factory in the northern French city of Caudry. John Brock has been making lace since 1889. We are selling holes. We are selling a fabric with mainly holes, so it's mainly empty, but it is why it's so interesting, because we have artistic possibility. Every day we are making something different compared to the other fabric. Unlike cheaper, mass-produced lace, designs aren't embroidered on top of fabric. They're continuously woven, creating a beautifully complex pattern. The machine might do the weaving, but it takes around 20 people to produce Lever's lace. It all starts with a design. John Brock uses a library of old designs, some from as far back as 1925. But it also creates new designs, which can take 3 to 5 weeks to complete. This is the most time-consuming part of the process. But the most delicate is threading the loom. Thousands of individual threads feed into the machine. Detailed designs need more threads, which raises the price. Workers load these small discs, called bobbins, by hand, keeping each thread separate and taut. Oui, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment avoir une bonne vision et beaucoup de patience. C'est très difficile. Workers place each bobbin into a carriage and check to ensure consistent weight and tension. When we set up a machine, we set up more than 15,000 yarns into the machine. We start from scratch, we start from zero, so we need to put every yarn at the right position. Once the loom starts running, lace makers are surrounded by an ocean of sound. Despite being such an old machine, each loom runs with extreme precision. The loom weaves a design line by line as workers refill it with more thread. Loom experts, called tullists, are in charge of overseeing the whole weaving process. They watch each loom, looking and listening for any tears.
A mistake at this step could seriously set back production. If there's a break, tourists reach into the loom, carefully repairing individual threads. Frederic has been working on these looms for 26 years. He checks to ensure that the original design is being recreated on the loom. Ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que c'est des vieilles machines qui ont 100 ans, voire plus. On sort de leur dentelle très fin et de très bonne qualité. Et c'est vraiment ça qui est passionnant. Each step requires an expert, but this makes finding new workers challenging. En ce moment, on a 6 jeunes ici en formation. Ça fait quelques mois qu'ils sont là, mais pour qu'ils commencent seulement à être bien formés, il faut au moins 3-4 ans. Et pour avoir un tuliste indépendant sur un métier, il faut compter 5-6 ans. It's a work of passion, and it's for that reason that all the people who work with us, most of them spend 15, 20, 25 years in the same company. That's the main difficult things to find for the new generation. But even after 20 or 25 years, you still learn things. It's so fascinating and it's a passion for people. Mon père, étant tuliste, m'a proposé de venir essayer le métier de raccommodeuse. Les filles qui étaient présentes m'ont tout appris. Isabelle is a lace inspector. Lace right off the loom is never perfect, so it's the inspector's job to spot any mistakes. Donc ici, le tuliste a signalé un défaut par une pastille. Donc ici, le but, c'est de regarder. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un écart, donc c'est un défaut. Je tire bien pour bien voir, je cherche les défauts, les trous. Donc là, on peut voir un trou. Donc quand c'est comme ça, hop, on enfile l'aiguille. These highly skilled workers inspect every inch of the lace and repair each section by hand. The repairs must be indistinguishable from the rest of the lace. Donc ici encore pareil, hein, on appelle ça un manque. En fait, il y a un fil qui a sauté, le fil il est là. Donc hop, elles mettent une épingle toujours. Lever's lace with no additions costs around $45 to $90 per square meter. That's over 10 times the price of mass-produced lace. But lace with add-ons like pearls, crystals, or sequins can cost several $100s more. Dresses or lingerie made with Lever's lace usually cost a few $100s at minimum. But some can cost a lot more. For the haute couture things, it can go just no sky limits. In addition to the materials and complicated manufacturing, the looms themselves increase the price. Lever's looms aren't made today. Companies have to maintain the looms that they have. It's not impossible to build a Lever's loom, but the costs required to manufacture it would be more than the demand for the product. Because of that, lace manufacturers rely on existing looms and even share spare parts between companies. But the lace industry in France used to look a lot different. In the early 20th century, there were tens of thousands of lace-related jobs. But as production modernized and fashion trends shifted, the industry consolidated to two main parts of France, Caudry and Calais. Today, only a few thousand jobs remain, and only a handful of the traditional lace producers are left. Competition from cheaper lace manufacturers has eliminated a lot of the industry. Many remaining producers focus on the high-end market. I think our customers are really different, but we still always looking what the mass production does. Our main advantage is to be ahead of the fashions. We work with creative trends office to know what the fashion will be, and we need to anticipate the next fashion trends. Demand for Jean Broc's lace had actually been increasing for the last few years, but the COVID-19 pandemic hit the industry hard. Brands like Chanel and Ralph Lauren rely on companies that create Lever's lace, but if demand doesn't increase, it'll be difficult to maintain the industry. I hope so, it will be easier. I hope so, but I'm not sure. We just spent
2 terrible years, so I hope now it will be more comfortable to invest and to train the new generation of people. Yeah, so that was the session today. I hope you guys enjoyed and learned something. मुझे तो बड़ा मजा आया था लेस का, खासतौर पे ये जो साइनोटाइप्स वाला देख के, हाउ बेसिकली लेस इज, मतलब किस तरह से बनती है आजकल भी, एंड हाउ इट्स स्टिल सो एक्सपेंसिव. So yeah, this is a comment of the question. जी अस्सलाम वालेकुम. मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं फिर मेरा ख्याल है बाद में देख लूंगी. वो जो लेस के हेलो पैटर्न आप. का पिक्चर मेकिंग का था वाज एक्चुअली रियली फैसिनेटिंग. Which one? कि किस तरह से वो इतने इंट्रिकेट प्रिंट्स की वो प्रिंट्स बना रहे थे. Yeah, these ones, right? The cyanotypes now. एंड इवन दैट सीम्स क्वाइट लाइक एन इन्वेस्टमेंट, राइट? बिकॉज आपने इतनी एक लेस बनाई तो वो डैमेज तो होती होगी प्रिंटिंग के प्रोसेस में, राइट या नहीं? नहीं, तो आप इसी बात कर रहे हो, राइट? जो वो सन में बनाते थे, आई डोंट थिंक कि उसमें लेस इटसेल्फ वुड बी डैमेज, क्योंकि आपने बस उसको सूरज के अंदर रखा है, बेसिकली जस्ट अ पेपर विद समथिंग ऑन इट, और आपने उसके ऊपर रखा है. आई डोंट थिंक द लेस वुड बी डैमेज्ड, बट आई थिंक यहाँ पे देयर वर मोर चांसेस जब आप कैंडल लाइट में काम करते थे. तो क्या कहते हैं, yes they had these globes and everything, but there were still chances कि you know कि आग लग गई या कुछ हो गया, तो there was it was a pretty, I would say, craft. तो मुझे तो ऑनेस्टली ये बॉबिन लेस, मतलब मैं ऐसे ही रैंडमली, अब आजकल बॉबिन लेस के काफी जो है ना यूट्यूब वगैरह पे नजर आते रहते हैं शॉर्ट्स ना, तो इट्स जस्ट सो अमेजिंग वाचिंग देम जस्ट गो टक 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 बना रहे होते हैं ये वाली, they just like That was, it's such a mesmerizing sound. और वो इतना जल्दी जल्दी उसको कर रहे होते हैं. I've always wondered if there was like, oh, I love that sound. Like, is there some rhyme or reason to the way they twist the lace, or is it just shuffling it कि बस वो फंस गई है किसी तरह है ना, and it's not gonna budge? एग्जैक्टली. तो हाँ, मतलब वही ना, there's like at least 100 bobbins, और उनको पता होता है एग्जैक्ट कौन सा बॉबिन किस धागे का है और कहाँ पे जाना है उसने. so it's very, Amazing. सही बात है. मुझे सबसे फैसिनेटिंग वो लगता है कि जब वो बॉबिन सारी निकाल देती है, it stays. It's it's just something I haven't been able to wrap my head around, you know. मतलब मैं अगर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करूँ तो मेरा तो फौरन खुल जाए. है ना, वो मतलब वो पिन लगा रहे हैं, then they done and they just take the pins out and it's there in their hands. How? और वो इतना खूबसूरत लगता है यूं ऐसे कर. इट्स लाइक सो whimsical, राइट? कि जैसे कार्टून्स में नहीं दिखाते कि यू रीच्ड इनटू द टीवी एंड यू जस्ट प्लक्ड समथिंग आउट वाली फीलिंग आती है. Yeah. बहुत बहुत मजे का है वो. So, you have a comment, question? Very good. ठीक है, चलें. Thank you. Thank you everyone. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Please.